Hello students, welcome to Gurkripa coaching classes. Today I will explain you long division method of square root and decimal expression of square roots. Long division method I explained you on yesterday. Last question of exercise I explain it by long division method. Same method is I here, as like we have to find square root of 729. For it we have to adjust grouping of last terms starting from last two terms. Then single term is leaving here. Then we have to adjust here 1 1s are 1, 2 2s are 2, 4, 3 3s are 9. 3 3s are 9 is greater than 7. So we will adjust here 2 2s are 4. Now subtract it 329. This 2 plus 2, 4. Now we have to adjust it at the table of same table. We have to adjust it where 9 should be on the same table. It will be on 3. 3 3s are 9. 3 3s are 9 and 4 3s are 12. It is 2 least than 329. Any other table is 7. 7 7s are 49. 49 and 7 4s are 28. 28 and 4 32. It is same. So it will be 7 7 329. Remainder is 0. Now root of 729 is equal to 27. Answer. Similarly, second part of this example is 1296. We will adjust it as this one. Now it will be adjusted at the table of 3 3s are 9. 396, and it will be 3 plus 3 6. At the table of 6 it can be adjusted. 6 6 are 36, 3 6 36, 36 and 3 39. It will be 36. So root of 1296 is 3636. Now decimal expansion of this exercise is 13th example. Remaining example I will explain on tomorrow, because according to it you can solve easily. Then different examples are there, 10th 11th 12th, that will solve on tomorrow. Now we have to adjust here 1225. 12 for 12.25. पॉइंट के पहले की जो टर्म है उसकी ग्रुपिंग लास्ट से करनी है, पॉइंट के बाद वाली टर्म की ग्रुपिंग स्टार्टिंग से करनी है. इस बात का ध्यान रखना है. नाउ इट विल बी एट द टेबल ऑफ 3 3s आर 9. हियर इज पॉइंट नाउ, तो यहाँ पे भी पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे. इट विल बी 325. पॉइंट यहाँ नहीं एडजस्ट करना, आंसर में एडजस्ट करना है बस. 3 3 6. एट द टेबल ऑफ we can adjust it at 5. 5 5s are 25, 32. 3 2 5 5. It is cancelled. And the root of 12.25 is equal to 3.5. Answer. One example is here 17.64. It will be at the table of 4. 4 4s are 16. And this is 164. 4 plus 4 8. It can be adjusted at the table of 82. Decimal here 2. This is 164, and its answer is 17.64 is equal to 4.2. Now I will explain you one question from my side. Calculator कितने है? Now I will explain a question of decimal expansion by myself in square root. I will take here value 5270.76. 5270.76. Here we have to adjust before decimal from last two digits. Remaining last digits are 2 here, and after decimal we have to adjust from starting two digits.
If there are more digits, then we have to adjust more two digits. Now it will be adjusted at the table of 6 are 36, 7 sevens are 49, 8 8s are 64. 8 8s are 64 is more than this one, so we will adjust it at the table of 7 sevens are 49. Now it will be here 370. Here we will adjust 7 plus 7 या double of this term, double of quotient, और 7 sevens are मतलब जिस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो उसको प्लस करना है, या डबल ऑफ क्वेश्चन जिस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 7 and 7, 7 plus 7 14. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हियर 14. 1 का टेबल 3 तक रीड करेंगे तो 3 3s आर एडजस्ट करके देखो 9, 4 3s are 12, 1 3 and 1 4. 429 is more than this one, so we will adjust here 2. 1 4 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2. It can be adjusted here 72. It will be 284. 6 17 minus 6. Here is 6. 6 means we have to adjust here 16. 1 borrow. 16 minus 8 is 8. Here is 2. 2 minus 2 is 0. एंड हेयर इज़ डेसिमल. डेसिमल यहाँ पे आंसर में एडजस्ट कर लेंगे और वैल्यू पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे नोट कर लेंगे. तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो टर्म हमने मल्टीप्लाई की थी वो थी 142 एंड 2. इन्हीं टर्म्स को प्लस करके क्या आएगा 144, या फिर 72 का डबल करोगे तो भी 144 ही आएगा. जो भी मेथड आपको याद रहता है वो इजीली याद रख लो. या तो जिस टर्म को मल्टीप्लाई किया उन दोनों टर्म्स को प्लस कर लो, या जो क्वोशिएंट है उसका डबल करो. अब 144 को एडजस्ट करना है 144. अगर हम ये टर्म लेंगे 1 का टेबल 8 तक रीड करेंगे तो इट विल बी 8 8s are 64, 6 32 and 6 38, 3 32 and 5 sorry 32 and 3 35, 3 8 and 3 11. 11,584 is 2 more than 8676, so we have to adjust here any other value. 144 के साथ कौन सी टर्म एडजस्ट करेंगे जिसके लास्ट में 6 आए, क्योंकि लास्ट टर्म है तो आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पे लास्ट में 6 के अकॉर्डिंग यहाँ तो ये आएगा 4 पे या फिर आएगा 6 पे. 6 6 are 36, 4 4 are 16. पहले हम देखते हैं 4 पे. 4 4 are 16, 1 4 4 are 16 and 1 17, 1 4 4 are 16 and 1 17, 1 5. ये से बहुत कम है तो 6 पे करके देखो. 144 के साथ मतलब इसी टर्म के साथ 6 6 6 are 36, 3 24 and 3 27, 2 24 and 2 26, 2 6 and 2 8. It is exact value, so we will adjust here 6 एंड आंसर में भी 6. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8767. तो रूट ऑफ 5270.76 इज इक्वल टू 72.6 आंसर. नाउ यू हैव टू सॉल्व 1 and 3 क्वेश्चन ऑफ 6.4. सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मच बेटर फॉर यू. अदरवाइज 1 कर लो, 3rd पार्ट कर लो, 5th पार्ट कर लो, 7th पार्ट कर लो, 9th पार्ट कर लो. If you like my video, subscribe my channel and share the video to your friends so that they get benefit, and press the bell icon button to get the updates, get my new updates. Thank you.